Good evening to all of you. आज आम डिस्कस करबा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज ऊपर हम आज क्वेश्चन डिस्कस करबा। देखो हमर क्वेश्चन नंबर 1 कोन अछि। मो वॉइस सुना जाउची? देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमो कोन देइची। At present the ratio of the ages of A and B is 6:5। A और B भितरे प्रेजेंट रो रेशियो हमको देइची 6:5। That means 6x 5x. Ratio is not actual value. Ratio आमर actual value नुह। एज आमर 6 और 5 नुह। रेशियो रे 6:5। तो सेति पय हमें ताको रिप्रेजेंट केमती करू रेशियो रे ना x मल्टीप्लाई करी कि हमें रिप्रेजेंट करू 6x 5x। 6x:5x। अच्छा 15 years from now। 15 years from now means 15 years from now means after 15 year. So after 15 year the ratio will get changed to 9:8. So after 15 year कौन है ये रेशियो ना 9:8 है। तो फर्स्ट आको हमें ट्रेडिशनल मेथड रे करिवा। तो प्रेजेंट रे रेशियो अछि 6x 5x। आफ्टर 15 years that means plus 15 is equal to 9/8। तो जस्ट हमें आको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले हमको x रो वैल्यू मिल जिवो। एटा तमरो केते होउची ना 48x plus 120 is equal to 45x plus 135। तो एटा तमरो 3x is equal to 15। तो x रो वैल्यू तुमको मिलिबो 5। x रो वैल्यू तुमको मिलिला 5। प्रेजेंट एज ऑफ a फाइंड आउट करिया पे पचारिची। तो प्रेजेंट एज ऑफ a इन रेशियो इज 6x। रेशियो रे केते अछि a रो प्रेजेंट एज केते अछि रेशियो रे ना 6x। तो x रो वैल्यू तमरो 5। तो 6x रो वैल्यू केते ही जिवो ना 6 into 5 that is equal to 30। बुझियला ना डाउट अछि? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर या डाउट? अच्छा आको हमें आर अल्टरनेट मेथड रे सॉल्व करिवा। दिस वन इज योर ट्रेडिशनल मेथड। हमें एटा ट्रेडिशनल मेथड रे सॉल्व करले। अच्छा देखो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूची। अच्छा प्रेजेंट रेशियो बिटवीन A and B is your 6:5। Present ratio is your 6:5। After 15 years, that means after 15 year, the ratio becomes 9:8। After 15 year, ratio becomes 9:8। अच्छा ये जो हमर अछि 6 और 5 भितरे गैप केते अछि 1। 9 और 8 भितरे भी गैप केते अछि 1। जदि मोर ए दीटा गैप सेम अछि ताले बाय डिफॉल्ट
ए दीटा गैप भी मोर सेम थिबो 6 आउ 9 भितर गैप केते अछि ना 3 आउ 5 आउ 8 भितर भी गैप सेम अछि 3 काहे कि सेम अछि बिकॉज़ 6 आउ 5 भितर गैप 1 9 आउ 8 भितर गैप 1 तो एई क्वेश्चन रे सेम अछि मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन रे सेम नथिबो ताको हमें सेम करिवा तो 6 और 5 भितर गैप 1 अछि 9 और 8 भितर गैप 1 अछि बाय डिफॉल्ट हमरो ए गैप भी सेम अछि 6 और 9 भितर गैप 3 5 और 8 भितर भी गैप 3 अच्छा ए गैप 3 टा कोन पय आछि ए जो गैप 3 टा आछि 6 टा 9 हे जी रेशियो रे 6 टा 9 हे जी कोन पय हे ना से 15 इयर्स पय हे जी जो 15 इयर्स रो जो गैप टा अछि से 15 इयर्स रो गैप पय ही तमरो रेशियो टा इंक्रीज करिछि 6 becomes 9 आउ आगो को जाउचंती माने रेशियो इंक्रीज हो रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज करिवो बिकॉज़ आफ्टर 15 इयर्स रेशियो तो इंक्रीज करिवो डेफिनेटली तो रेशियो केते इंक्रीज करिछि ना 3 इंक्रीज करिछि और से 3 टा कोन पे इंक्रीज करिछि ना 15 इयर्स पई 3 टा इंक्रीज करिछि तो 3 इक्वल टू 15 1 इक्वल टू 5 प्रेजेंट एज ऑफ ए पचरिछि तो प्रेजेंट रेशियो केते अछि ए रो ना 6 अछि 1 रो वैल्यू 5 तो 6 रो वैल्यू केते हे जिवो ना 30 यदि प्रेजेंट एज ऑफ बी पचार थांता ताले बी रो एज केते हे थांता ना 25 क्लियर या डाउट तो हमें ट्रेडिशनल मेथड रे भी सॉल्व कले आउ एग्जाम अप्रोच हमर एमती ही रहिबा दरकार हमें एई अप्रोच को ही फॉलो करिबा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन रे एनीवन हैविंग डाउट क्वेश्चन नंबर 1 जदि डाउट अछि पचारि पारो क्वेश्चन नंबर 1 रे if you have no doubt आउ थरे then I will क्वेश्चन प्लीज आउ थरे रेशियो केते देछि ए और बी रो रेशियो केते देछि 6:5 एटा प्रेजेंट रो रेशियो 6:5 is your present ratio of A and B. Present ratio is your A and B रो present ratio केते अछि ना 6:5 after 15 year ratio केते हे जाइछि 9:8 रेशियो चेंज हेछि आफ्टर 15 इयर रेशियो चेंज हेछि अच्छा मो कहबा कथा कोन ए जो 6 और 5 भितर गैप केते अछि 1 सर 9 और 8 भितर गैप केते अछि 1 फास्ट मो एई गैप चेक करिवि फास्ट मो एई गैप चेक करिवि 6 और 5 भितर गैप 1 9 और 8 भितर गैप केते 1 जदि मोर एई दीटा गैप सेम अछि जदि मोर एई दीटा गैप सेम अछि तो बाय डिफॉल्ट ए साइड गैप दीटा भी सेम थिबो देखो सेम अछि गैप केते केते अछि ना 3 3 रो गैप अछि माने प्रेजेंट रो जार रेशियो 6 थिला आफ्टर 15 इयर्स तार रेशियो 9 हे जिछि हेछि कि नहीं यस सर और जार रेशियो 5 थिला तार 8 हे जिछि सेम इंक्रीमेंट हेछि सेम इंक्रीमेंट सेम हेछि 3 3 बोथ ए और बी पर तो ए केस रे भी 3 इंक्रीमेंट हेछि और बी केस रे भी 3 इंक्रीमेंट है सेम इंक्रीमेंट हेछि बिकॉज़ गैप सेम अछि 6 और 5 भितर गैप 1 9 और 8 भितर गैप भी 1 तो ये जो 3 टा डिफरेंस आसीछि जो 3 डिफरेंस आसीछि ए 3 कोन पे डिफरेंस आसीछि ना से 15 ईयर पे ही डिफरेंस आसीछि 3 इक्वल टू कहा सहित मैं इक्वेट करि परिबी 3 को मैं कहा सहित इक्वेट करि परिबी ना 15 सहित इक्वेट करि परिबी यदि 3 इक्वल टू 15
तो 1 रो वैल्यू केते हे जिवो 15 by 3 3 that is equal to 5 प्रेजेंट एज ऑफ ए पचारिछ प्रेजेंट एज ऑफ ए अच्छा रेशियो रे ए रो वैल्यू केते अछि रेशियो रे प्रेजेंट रे 6 तो 1 रो वैल्यू जदी 5 तो 6 रो वैल्यू केते हे जिवो 6 into 5 30 30 तो ताकू टिके रेशियो लेखिला बेले साइड रे टिके एमती लेखि नबो टिके मार्क लेखिबो इजी होबो माने सॉल्व करिया पई 6:5 साइड रे मुझे एमती लेखि ची p स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट आफ्टर 15 इयर्स रेशियो 9:8 तो साइड रे टिके लेखि नबो आफ्टर 15 इयर्स सो दैट हमें स्टेप जदी हमें स्टेप आगु को जाउ चंती ताहाले हमें टिके हिंट मिलले भी हमें रेशियो संग संग सॉल्व करि परिबा आज्ञा सर क्लियर वे Question number 1 doubt na clear. Problem based on age ro question number 1. Next question number 2. देखो जियो एई question रे कोन थिला ना 6 और 5 भितरे गैप सेम थिला 9 और 8 भितरे भी गैप सेम थिला 6 और 5 भितरे गैप 1 9 और 8 भितरे भी गैप 1 सेति पई बाय डिफॉल्ट हमरो साइड रे भी गैप सेम थिला 6 9 हे इच 5 8 इच बोथ केस रे 3 3 इंक्रीमेंट इच काहे कि ना एटा भी सेम गैप अछि 1 1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिबा क्वेश्चन सॉल्व करिया पे क्वेश्चन नंबर 2 ratio of present ages of two brother is 1:2 present age of two brother को मु ना देली let b1 और b2 अच्छा प्रेजेंट रो रेशियो दे देची प्रेजेंट रो रेशियो देची हमको प्रेजेंट रो रेशियो इज योर 1:2 ट्रेडिशनल मेथड रे मु सॉल्व करूनी फर्स्ट क्वेश्चन मु ट्रेडिशनल मेथड रे सॉल्व करथिली बाकी सेम स्टेप फॉलो करिवो अच्छा रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर इज 1:2 5 years back 5 years back that means 5 years back ratio was 1:3 ratio was 1:3 what will be the ratio of their ages after 5 years what will be the ratio of their ages after 5 years तो 5 year परे तांकर रेशियो केते हबो दिस इज योर क्वेश्चन What will be the ratio of their ages after 5 years? Solve करूचो question number 2 अच्छा देखो प्रेजेंट रो रेशियो देइची 1:2 अच्छा प्रेजेंट रो रेशियो भितरे गैप केते अछि 1 और 2 भितरे गैप केते अछि 1 1 और 1 और 3 भितरे गैप केते अछि 2 2 देखो प्रीवियस क्वेश्चन रे गैप सेम थिला बट ए क्वेश्चन रे गैप सेम नाही तो जेहेतु गैप सेम नाही तो ए दीटा गैप भी सेम नथिबो देखो 1 और 1 भितरे गैप केते अछि 0 2 और 3 भितरे गैप केते अछि 1 2 और 3 भितरे गैप केते अछि 1 प्रीवियस क्वेश्चन रे गैप सेम थिला सेति पई 6 becomes 9 5 becomes 8 सेम रेशियो रे सेम इंक्रीमेंट हेतिला
बट एठी तो गैप सेम नहीं, तो सेति पई सेम इंक्रीमेंट भी हेइनी और केबे भी रेशियो रो डिफरेंस जीरो आसीबोनी, रेशियो कमिबो बा बढ़िबो, केबे भी जीरो आसीबोनी। तो हमरो B1 और B2 भितरे रेशियो हमरो देइची प्रेजेंट रो रेशियो 1:2 ଆଉ 5 years back ର ରେସିଓ ଦେଇଛି 1:3, 5 year back। अच्छा, रेशियो ହେଇଗଲା ଆମର 1 डिफरेंस दिस 2 डिफरेंस। तो ଏବେ क्रॉस मल्टीप्लाई करिवा, देखो केमिति मल्टीप्लाई करूची। 1:2 सहित मु 2 को मल्टीप्लाई करिवि, 1:2 सहित मु 2 को मल्टीप्लाई करिवि। तो 2 को जदि मल्टीप्लाई करिवि तो रेशियो केते हे जिवो ना 2:4 और साइड रे लिखिबी प्रेजेंट B1 और B2। बुझी पारलो 2:4 केमती रेशियो कली। क्लियर या डाउट? 2:4 प्रेजेंट रेशियो इज योर 2:4। अच्छा, 1:3 सहित 1 को मल्टीप्लाई करिवि तो रेशियो हे जिवो 1:3। एबे देखो गैप सेम हे जिवो, 2 और 4 भितरे गैप 2 और 1 और 3 भितरे भी गैप 2। और देखो या भितरे भी गैप एबे सेम हे 1 1 ଆଉ ଏଟା ତମର ରେସିଓ 1:3 ରେସିଓଟା ତମର ହେଲା 5 year back। बस ता साइड रे खाली लिखि नउथु। अब अच्छा, एठी हमरो रेशियो रे गैप ହେଲା 1 1 इक्वल टू हाउ मच, जेमती प्रीवियस क्वेश्चन रे 3 इक्वल टू 15 हेतिला, काहे कि ना 15 इयर्स रो गैप थिला। तो एठी तमरो रेशियो ହେଲା 1, तो हमर रेशियो भितरे गैप अछि 1, तो 1 टा कोन पई गैप अछि ना से 5 इयर्स पई, तो 1 इक्वल टू 5। तो पचारिछि कोन ना रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर। अच्छा, प्रेजेंट रे B1 और B2 भितरे रेशियो केते अछि? प्रेजेंट रो रेशियो अछि 2:4 और 1 रो वैल्यू तुमको मिलिछि 5, 1 इज इक्वल टू 5। तो B1 और B2 भितरे प्रेजेंट रेशियो तमे चेंज करिकि करिछो 2:4। तो 1 रो वैल्यू जदि 5 तो 2 रो वैल्यू केते हे जीवो ना 10 और 4 रो वैल्यू केते हे जीवो ना 20। तो एक्चुअल एज B1 रो एक्चुअल प्रेजेंट एज 10 और B2 रो एक्चुअल प्रेजेंट एज इज योर 20। बट से ताकू रेशियो दरकार आफ्टर 5 इयर। तो जहाँ को एबे 10 आफ्टर 5 इयर ताकू केते एज हे जइथिबो ना 15, और जहाँ को एबे 20 प्रेजेंट एज जहाँ को एबे 20, तो आफ्टर 5 इयर ताकू केते एज हे जइथिबो ना 25। तो रेशियो हमरो केते हे जाउची ना 3:5। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर या डाउट? स्वागतिका नायक, सोनाली बेहरा, वेरी गुड, 3:5। अच्छा, क्लियर ना डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 3। At present, the sum of the age of father and his son is 100 years. तो हमको देइछि फादर प्लस सन 100 years sum at present. Present रे sum of the age of father and his son is 100 years. 5 years ago. अच्छा 5 years ago रो कौन देइछि 5 years ago पई हमको 5 years ago रे हम कौन देइछि ना तांकर रेशियो देइ देइछि रेशियो हमको केते देइछि ना 2:1 5 years ago रो रेशियो देइ देइछि इन बिटवीन फादर एंड हिज सन 2:1 तो 5 years ago प्रेजेंट रे फादर एंड सन मिसिकी 100 years तो 5 years ago फादर एंड सन केते इयर्स हेइथिबो ना 90 years फादर और सन sum of the ages of father and son before 5 years is 90 years because 5 वर्ष आगरु जहा को फादर और सन एबे मिसिकी 100 years तो 5 वर्ष आगरु फादर रो भी 5 years माइनस हबो आउ साइमल्टेनियसली सन रो भी माइनस हबो 5 years तो फादर प्लस सन is equal to 90 years 5 years ago बट ये 90 years टाको हमको डिवाइड करिछि रेशियो रे देई देइछि केते ना 2:1 2:1 तो रेशियो रे ऐड करले 3 is equal to 90 3 is equal to 90 तो 1 रो वैल्यू केते हबो ना 30 1 is equal to 30 तो 2 रो वैल्यू केते हबो ना 60 और 1 रो वैल्यू तुमको मिली 30 तो फादर और सन को मु डिवाइड कर देली 90 इयर्स टाको मु डिवाइड करली फादर रो एज 60 और सन रो एज हला 30 एटा हला 5 इयर्स एगो 5 इयर्स एगो 5 वर्ष आगरु फादर रो एज हला 65 आउ सन रो एज हला 30 अच्छा फादर रो एज 5 इयर्स एगो 60 इयर्स तो प्रेजेंट रे केते हे जीवो फादर रो एज प्रेजेंट रे केते हे जीवो ना 65 और सन रो केते हे जीवो ना 35 ऐड करले केते हे जीवो ना 100 और क्वेश्चन रे भी देइथिला प्रेजेंट रे फादर एंड सन सम ऑफ फादर एंड सन इज 100 इयर्स बट हमको रेशियो पचारिछि फादर और सन रो रेशियो आफ्टर 10 इयर्स 10 इयर्स 10 वर्ष पर रो रेशियो पचारिछि तो 10 वर्ष पर रेशियो केते हि जीवो ना प्रेजेंट रे फादर रो एज हला 65 तो 10 इयर्स परे फादर रो एज हे जैथिबो 75 और सन रो प्रेजेंट एज 35 आफ्टर 10 years it will become 45 and ratio is your 5:3 clear your doubt question number 3 next question number 4 question number 4 try to solve this question number 4
Question number 4, solve. At present, age of two person are 36 and 50 years. Present age जनको 36 ଆଉ जनको 50. ସେ କହୁଛି if after n year କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ratio of their age will be 3:4. रेशियो ତାଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3:4. କେତେ ବର୍ଷ ପରେ 3:4 ହବ. ତ ଦେଖ ଦିଟା पर्सन ए बी ए को प्रेजेंट रे अछि 36. अच्छा जदि मु 36 सहित 4 ऐड करिवि फर्स्ट ऑप्शन अछि मोर 4. जदि 4 वर्ष पर जदि मु फर्स्ट ऑप्शन के यूज करूची 4 फर्स्ट ऑप्शन अछि मोर 4 जदि मु 4 को यूज करूची प्रेजेंट रे जहा को 36 4 वर्ष पर ताको केते हे जीवो ना 40 आ प्रेजेंट रे जहा को 50 4 वर्ष पर ताको केते हे जीवो ना 54. आ एटा तमर रेशियो केबे भी 3:4 हबनी. तो जदि मु अच्छा 4 अप्लाई कली मोर एटा आंसर हबनी. रेशियो 3:4 होनी. अच्छा जदि मु सेकंड ऑप्शन यूज करूची 7 तो 36 प्लस 7 43. 36 प्लस 7 43 ये केबे कैंसिल आउट ही हबनी. 43 जे प्राइम नंबर. अच्छा नेक्स्ट 6 जदि मु 6 यूज करूची 36 प्लस 6 42 आउ जहा को 50 प्रेजेंट रे 6 इयर्स परे ताऊ केते ही जीवो ना 56. 14 रे कैंसिल आउट करले 3:4 होची. So this is my answer. Option 3. 6 वर्ष परे रेशियो चेंज हे जीवो 3:4. Clear your doubt? Question number 4. Next, question number 5. Solve this one. I am giving you time for this question. Try to solve this one. My grandfather was 9 times older than me 16 years ago. My grandfather was 9 times older than me 16 years ago. He will be 3 times of my age 8 years from now. 8 years ago, the ratio of my age to that of my grandfather was. 8 years ago, the ratio of my age to that of my grandfather was.
My grandfather was 9 times older than me 16 years ago. Acha. So the ratio of my age to that of my grandfather was. Acha. Grandson, grandfather. 16 year ago. 16 year ago. 16 year ago. My grandfather was 9 times older than me. ଯଦି ମୋର 1 times ହୁଏ ତ grandfather ହବ ମୋର 9 times 16 years ago. ଆଚ୍ଛା present 16 year ago ଏବେ ଆସିବ present. He will be 3 times of age 8 years from now. ତ present ରୁ after 8 year, present ରୁ after 8 year, he will be 3 times of my age. He will be 3 times of my age. He will be 3 times of my age after 8 year. After 8 year or 16 year ago. 1:9, 1:9, 1:3. 16 year ago, present, then after 8 year. अच्छा गैप केते अछि 8, गैप केते अछि 2. सेम गैप नाही तो आको फर्स्ट सेम करिवा. तो सेम केमिति करिवा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करी 1:9 सहित कौन मल्टीप्लाई करिवा ना 2. तो रेशियो कौन हे जीवो ना 2:18. 1:3 सहित कौन मल्टीप्लाई करिवा ना 8. तो रेशियो केते हे जीवो ना 8:24. एटा हला तमरो प्रेजेंट रो रेशियो. सॉरी, दिस रेशियो इज बिफोर 8 years. This ratio 2:18, 2:18 before 16 years ago, 16 year ago, and 8:24, 8:24 after 8 year. अच्छा एबे देखो गैप 16, गैप 16, सेम गैप सेम हे जाइची. तो बाय डिफॉल्ट ए गैप भी सेम थिबो. तो 2 8 हे जाइची, 18 24. दैट मीन्स 6 इंक्रीमेंट हेची बोथ रेशियो रे. केते इंक्रीमेंट हेची ना 6 इंक्रीमेंट हेची. 2 becomes 8, 18 becomes 24. 6 इंक्रीमेंट हेची. अच्छा ये जो 6 टा इंक्रीमेंट हेची, ये जो 6 टा इंक्रीमेंट हेची एटा केते वर्ष सहित इक्वल हबो. 6 टा जो इंक्रीमेंट हेची एटा केते वर्ष सहित इक्वल हबो. देखो एटा हला हमरो 16 ईयर एगो, 16 ईयर एगो. एटी हमरो गैप हला 16 और एटी हमरो गैप हला 8. 16 प्लस 8 हला 24. 6 टा का सहित इक्वल हबो ना 24 सहित. तो 1 रो वैल्यू केते हे जीवो 24/6, दैट इज इक्वल टू 4. अच्छा 8 इयर्स हमरो वैल्यू मिली गला 4. बट से हमको पचारिची 8 इयर्स एगो रो रेशियो. तो 8 इयर्स एगो रो रेशियो कोन हे जीवो ना हमरो एबे देखो 1 रो वैल्यू 4 मिलीची. तो एटे आफ्टर 8 इयर्स रो रेशियो केते अछि ना 8:24. 8:24 आफ्टर 8 इयर्स रेशियो अछि. यदि 1 रो वैल्यू 4 ताले 8 रो वैल्यू केते हबो ना 32. 24 रो वैल्यू केते हबो 96. बट से पचारिची हमको बिफोर 8 इयर्स. बिफोर 8 इयर्स मीन्स प्रेजेंट रे केते हे जीवो आफ्टर 8 इयर्स 32. प्रेजेंट रे केते हे जीवो
आफ्टर 8 years 32 प्रेजेंट रे हे जीवो 24 प्रेजेंट रे केते होबो ना 24 आ जहा को आफ्टर 8 वर्ष परे 96 हेतिला ताकू प्रेजेंट रे केते हेतिबो ना 88 एटा हमरो प्रेजेंट बट सीए पचारिची हमको 8 years ago तो 8 years ago एटा 16 आ एटा हे जीवो तमरो 80 तो रेशियो हे जीवो तमरो 1:5 ratio is your 1:5 very good सोनाली बेहरा 1:5 बुझियला ना डाउट अछि क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर या डाउट Clear. नेक्स्ट बुझियला तो Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 try to solve this question number 6 what is John's present age if 10 years later his age will be 5 times his age 6 years ago केते हला क्वेश्चन नंबर 6 आंसर सॉल्व हला what is John's present age if 10 years later John ra present age पचारिची find out करिया पे let John ra present age be x present age of John 8.75. be x present age of John be x 10 years later means after 10 years x plus 10 present age x after 10 years x plus 10 will be 5 times of x minus 6 6 years ago x minus 6 तो एटा को सॉल्व करले x रा वैल्यू मिल जिवो कोन 5x minus 30 तो एटा तमरो हे जिवो 4x equal to 40 x रा वैल्यू मिलिवो 10 the present age of John is 10 clear your doubt question number 6 So, sir, question number letter ଲେଖା ହେଇଛି ନା after ଲେଖା ହେଇଛି? Letter ଲେଖା ହେଇଛି ନା after ଲେଖା ହେଇଛି? letter 10 ଦେଇଯିବ years. ଲେଖା letter letters mean ପରେ
means after बुझिगली 10. Question number 7. One year ago से ratio 35 केते हला 35 35. yes sir देखिबा 1 year ago the ratio of Parul and Atima age was 5:6. 1 year ago Parul Atima 1 year ago side ready लेखिन हबो 1 year ago ratio was 5:6. After 4 year the ratio becomes 6:7. 6:7 after 4 year. अच्छा find the present age of Atima. Atima रो present age पचारि तो देखो आरो गैप केते अछि 5 और 6 भितरे गैप 1 6 और 7 भितरे गैप 1 गैप सेम अछि तो ए साइड गैप भी सेम थिबो 5 6 6 7. अच्छा रेशियो रे इंक्रीमेंट केते हेची ना बोथ केस रे रेशियो रे इंक्रीमेंट 1 हेची तो रेशियो रे इंक्रीमेंट 1 काहे की हेची ईयर केते गैप केते अछि ना 1 year ago आफ्टर 4 year दैट मींस 5 गैप अछि 5 वर्षर गैप अछि 1 year ago आफ्टर 4 year टोटल गैप इज योर 5 year मींस 1 equal to 5. अच्छा कहार प्रेजेंट एज पचारिची ना प्रेजेंट एज ऑफ अतिमा तो अतिमा रो प्रेजेंट एज पचारिची तो 1 रो वैल्यू 5 तो 6 रो वैल्यू केते हे जिवो अतिमा रो वैल्यू 6 1 year ago रेशियो थिला 6 तो 1 रो वैल्यू 5 तो 6 रो वैल्यू केते हे जिवो ना 30 6 रो वैल्यू होला 30 1 year ago 30 तो प्रेजेंट रे केते हे जिवो ना 30 plus 1 that is equal to 31. 35 is the wrong answer. 31 is the correct answer. बुझी हला ना डाउट अछि Sir, 6 into 30 पुणी 1 1 एटा बा जियो 1 year ago बा ताको 30 वर्ष हेतिला 1 year ago ये जो 6 रेशियो टा अछि सेटा तो 1 year ago रो रेशियो टा ना 6 जो हमरो 6 रेशियो टा अछि सेटा 1 year ago रो रेशियो टा ना तो 1 year ago हला 30 1 year ago 30 अतिमा को 1 year ago केते हितिला 30 बट पचारिची प्रेजेंट एज ऑफ अतिमा तो प्रेजेंट एज केते होबो गोटे 30 वर्ष आगरो तुमको 20 वर्ष हितिला एबे केते हितिबो 21 हितिबो बुझियला ना डाउट अछि बुझिला 35 जे आंसर कहउतलो डाउट ना क्लियर clear sir गुड बुझियला भूल करतिलो हाँ सर जो डिफरेंस था वो 1 रो वैल्यू 5 नहीं जाइल तो
तो 1 ଇୟର ଭାବିଲି 5 ଆଡ୍ କରିଦେବି 30 ରେ। ଆଉ ଏମିତି କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଗଲି। Next, question number 8. Shivani is 60-year-old and Ritu is 80 years old. How many years ago their age ratio was 4:6? ଶିବାନୀ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର 4:6 ଥିଲା ରେସିଓ ପଚାର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ଶିବାନୀକୁ ଏବେ ହେଲା 60 ଆଉ ରିତୁକୁ ଏବେ ହେଇଛି 80 ତ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ରେସିଓ ହେଲା 4:6 ତ ଦେଖ 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ୟୁଜ କରୁଛି 10 ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 50 ଇଏ ହେଲା 70 ଇଏ ରେସିଓ ହବନି ତ ଏଇ ଅପସନ ଟା ମୋର ହବନି 15 ୟୁଜ କଲି 15 ୟୁଜ କଲି 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେତେ ଥିବ 45 ଆକୁ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କେତେ ହେଇଥିବ 75 65 ତ ଇଏ ବି ରେସିଓ ହବନି अच्छा 20 60 20 ହେଲେ 40 80 20 ହେଲେ 60 तो ये रेशियो टा होची 4:6 आंसर इज योर 20 क्लियर या डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 The sum of the ages of 5 children born at the intervals of 3 years. तो 5टा चिल्ड्रेन बॉर्न होइचंदी 5टा चिल्ड्रेन जन्म होइचंदी इंटरवल हला तमरो प्रति 3 वर्ष रे गोटे गोटे चिल्ड्रेन गोटे गोटे छुआ जन्म होता प्रति 3 वर्ष रे जन्म होचंदी आउ से 5टा चिल्ड्रेन जो जन्म होइचंदी तांकर टोटल एज भी दे देची तांकर सम ऑफ द एज देची 50 इयर्स से कहछि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड रो एज केते हबो तो फर्स्ट ऑप्शन पकाउछि फर्स्ट ऑप्शन अछि 4 फर्स्ट यंगेस्ट चाइल्ड हला तुमको केते वर्ष यंगेस्ट चाइल्ड हला 4 वर्ष तो ता इंटर सब 3 3 बढ़े के लेकिन हबो 7 ये हला 10 ये हला केते 13 13 हेले ये हला केते 16 तो हे गला तमरो टोटल मेंबर 5 ऐड करिनियो 39 ये हला केते 43 7 50 तो आंसर इज योर 4 Clear your doubt? Question number 9. क्लियर सर। Question number 10.
So hence mean hence 4 year hence ए सब वर्ड लिखिबा रीजन कोन acquainted हवा दरकार ए वर्ड सहित टर्म सहित टर्म जानिया दरकार 4 year hence माने हला आफ्टर 4 years 4 year hence means after 4 years 4 year hence माने हला after 4 years Sir, 16. 16 16 देखिबा सॉल्व करिबा 16 year ago sorry 6 year ago the ratio of ages of Kunal and Sagar ro ratio हमरो केते थिला ना 6:5 6:5 6 year ago साइड रे टी लिखि नबो 6 year ago 4 year hence 4 year hence means after 4 year 4 year hence means after 4 years तो 4 years रे तमर रेशियो केते हे जाउची ना 11:10 अच्छा गैप 6 और 5 भितरे गैप 1 11 और 10 भितरे भी गैप 1 तो जेहेतु गैप सेम अछि तो बाय डिफॉल्ट एक गैप भी सेम थिको तो 6 becomes 11 means 5 increment ହେଇଛି ଆଉ 5 becomes 10 means 5 increment ହେଇଛି तो both ratio रे 5 increment ହେଇଛି 5 कोन ପାଇଁ increment ହେଇଛି रीजन हला गैप हमरो केते वर्ष अछि ना गैप हमरो 10 years अछि 6 years ago after 4 years total gap 10 years तो 5 equal to 10 तो 1 रो वैल्यू केते होबो ना 2 अब पचारि जी व्हाट इज सागर्स प्रेजेंट एज तो सागर रो प्रेजेंट एज पचारि तो 1 रो वैल्यू मते 2 मिली जाईची आउ सागर 6 years ago रो रेशियो मते जणा अछि 5 तो 1 रो वैल्यू जदी 2 तो 5 रो वैल्यू केते हे जीवो ना 10 तो सागर रो एज मिली गला 6 years ago ताकू 10 हेतिला बट प्रेजेंट पचारिची that means 10 plus 6 that is equal to 16 very good 16 is the right answer next question number 11 the sum of the present ages of father and his son is 60 years 5 years ago father's age was 4 times the age of his son so now the son's age will be we try to solve this question the sum of the present age of father and his son father and his son 60 year father plus son 60 year 5 years ago the ratio was 4 times of his son so 5 years ago this is your present 5 year ago father plus son is equal to 50 year oh eta ratio re tomoro divide heichi 4:1 4 times of his son means 4:1 that means 5 is equal to 50 so 1 रो value हला 10 1 रो value 10 तो 4 रो value हे जिवो 40
5 years ago. Son's age will be, so now the son's age will be, son ro age 5 years ago, son ro age केते थिला 10, तो प्रेजेंट रे केते ही जीवो, son's age will be after 5 years, so now the son's age will be, present रे son रो age केते ही जीवो 15. Clear या doubt? Question number 11. Clear, sir. Next, question number 12. A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be half of the age of his mother. What is the present age of his mother? ହେଇପାରିବ? Question number 12. Person and mother. Present ର ratio କେତେ ଦେଇଛି ନା 2/5. That means 2/5 present. 2:5. After 8 years. After 8 years, he will be half of the age of his Sir, mother. He 40 will hobo. be half of the age 40. of his mother. Answer? 40. 40 option D. हाँ sir. Okay. अच्छा, after 8 years, half of the age of his mother, 1:2. अच्छा, gap केते अछि? 3. Gap केते अछि? 1. Same gap नहीं, तो ये gap भी same नहीं. तो फर्स्ट ए गैप को सेम करिवार अछि, क्रॉस मल्टीप्लाई करिवार अछि. 2:5 सहित 1 मल्टीप्लाई करिवि, तो पर्सन आउ मदर भितरे केते रेशियो होई जीवो, प्रेजेंट रो रेशियो सेम रहिबो 2:5. आउ आफ्टर 8 इयर्स रो रेशियो कोन होई जीवो, आफ्टर 8 इयर्स रो रेशियो कोन होई जीवो ना 3:6. एबे देखो गैप केते अछि ना 3, गैप केते अछि ना 3, गैप सेम हे जाइछि, तो बाय डिफॉल्ट ए गैप भी सेम हे जाइथिबो 1 1. अच्छा, ए 1 टा कोन पय हेछि ना 1 टा एथि पय हेछि बिकॉज 8 वर्ष गैप अछि आफ्टर 8 इयर. तो 1 रो वैल्यू जदी 8, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर पचारिछि, तो मदर रो प्रेजेंट रो रेशियो केते अछि 5, तो 1 रो वैल्यू 8, तो 5 रो वैल्यू केते होबो ना 40. 40 is the right answer. Very good. ओके, आज पे एतिकी. नेक्स्ट क्लास हमें नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करिबा. ओके, ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. गुड बाय. Yes.